Hello guys, good evening everyone. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. We are here at the channel that is Let's Crack NEET PG. Good evening Dr. Ajit. Good evening Dr. Rehan. Myself Dr. Nidhi. I am alumni of King George Medical University KGME Lucknow and I am teaching you all physiology. And guys, we all know physiology weightage is very high. Good evening Dr. Amandeep. हर साल 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर रहते हैं, तो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. सो एवरीवन क्लियर द कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी एंड सो दैट यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जाम एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट. चलो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो मी आउट देयर सो दैट you can attend many more other classes also. My page is unacademy.com/@kgmc. ठीक है, I had taken a plus course. There is a plus course. You can join by using the referral code that is Dr. Nidhi. वेरियस स्पेशल क्लासेस भी मैंने लिए हैं, किसी भी टाइम आप उनको एक्सेस कर सकते हो और अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो. There are various other renowned educators on this platform. If you take the subscription, you will definitely be benefited by the subscription. बात करते हैं different subscription की. First is plus subscription. In plus subscription, you will be able to attend daily live classes. And in live classes, आप अपने educator से interact कर सकते हो, अपने doubt को live classes में ही clear कर सकते हो. Various live tests and live quizzes are there. From that, you can analyze your preparation. Various batch course, capsule course, rapid revision courses going on, so you can join it anytime. There is a structured schedule out here. If you follow that schedule, you will definitely able to achieve your target with good rank and you will be in your dream college, everybody. Now newly launched subscription is Iconic Subscription. In this you will be get access for the prep ladder along with all the benefit of plus. You will get access of the prep ladder. In this you will be get access for the video lecture of prep ladder, question bank 2.0, rapid revision course, and you will also be provided with handwritten notes. So if you want to avail these features also, go for the Iconic subscription. Coming to the subscription fee for the Iconic starts for 1 year. 1 year fee is 55,000, 18-month fee is 66,000, 24-month fee is 77,000, 36-month fee is 92,000. So after using my referral code, you will get instant 10% discount in your subscription and your subscription fee will become more economical. 1 year fees will reduce to 49,500, 18-month fee will reduce to 59,400, 24-month fee will reduce to 69,300, 36-month fee will reduce to 82,800. So that will be more economical for all of you. So do use my referral code, that is Dr. Nidhi. Now coming to the plus subscription. Plus subscription are also available for lower duration like 1 month, 3 month and 6 month. So according to your requirement, you can take the subscription out here. 1 month fee is 5,000, 3 month fee is 12,500, 6 month fee is 22,500, 12 month fee is 27,500, 18 month fee है 32,500, 24 month fee is 40,000 and 36 month fee कितनी है 50,000. After using my referral code, you will get instant 10% discount in your subscription. A 1 month fee reduced to 4,500, 3 month fee reduce हो जाएगी 11,250, 6 month will reduce to 20,250, 12 month fee will reduce to 24,750, 18 month fee will reduce to 29,250, 24 month fee will reduce to 36,000 and 36 month fee will reduce to 45,000. So that will be more economical for all of you. So do use my referral code, that is Dr. Nidhi, to get instant 10% discount in your subscription. Lastly, Telegram app download कर लीजिए and follow me out there. My page is NEET Physiology or you can search Unacademy Physiology ताकि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो. चलो, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, आज का लेक्चर है GFR पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट.
Today we will study about this. चल, first coming to the introduction part. हमारा जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन. एंड ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. ठीक है. एंड मेन फंक्शन जो किडनी का है दैट इज फिल्टरेशन थ्रू दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ठीक है. हमारा जो किडनी है दैट कंसिस्ट ऑफ दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज यूनिक कैपिलरी इन आवर बॉडी. जनरली क्या होता है, हमारा जो भी arterioles हैं, let's see, arterioles open in our capillary network and capillary फिर से join होती है and it will form the venules. ठीक है. arterioles open होता है capillaries में and capillaries join करती है and it form the venules. But this is the unique capillary. Good evening Dr. Sudarshan. ये यूनिक कैपिलरी है. क्यों यूनिक है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू आर्टेरियोल्स ओनली, दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल्स एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स. ठीक है. ये यूनिक कैपिलरी है जो कि डॉक्टर सुदर्शन आप नोट कर सकते हो लेक्चर के ड्यूरिंग भी आप नोट कर सकते हो सर्टेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आप लेक्चर के बाद भी अपना नोट्स बना सकते हो. रिकॉर्डेड सेशन देखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए. अभी मैंने पीपीटी कहीं शेयर नहीं की है. अगर शेयर करती हूँ तो मैं ज़रूर नीट फिजियोलॉजी पेज पे शेयर कर दूँगी. फिलहाल के लिए आप लोग नोट्स बना लो. क्लियर डॉक्टर सुदर्शन? अब बात करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो फिल्ट्रेशन होता है. दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैज़ फिल्ट्रेशन साइज ऑफ 4 to 8 नैनोमीटर. ठीक है. और जो फिल्टर्ड सब्सटेंस है दैट रीचेस टू द बोमेंस कैप्सूल. और नॉर्मली जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें हमारी प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड. ठीक है. क्लियर? प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर होता है वो अब हम देखेंगे. बिफोर हम एक डायग्राम है, ये ध्यान से सभी लोग देखें. दिस इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. इट इज अ यूनिक कैपिलरी बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन afferent arteriole and efferent arteriole. That is, it is present between two arterioles. ठीक है. So this is unique capillary. और यहाँ से filtrate होके जो भी substance है that reaches to the Bowman's space. Clear? और normally जो है filtration हमारी जो proteins हैं that are not filtered in normal condition through these glomerular capillaries. ठीक है. इसमें कुछ mesangial cells होते हैं. These are extra glomerular mesangial cells. This green one. These are extra glomerular mesangial cells. और glomerular capillary के पास जो mesangial cell होते हैं that are intraglomerular mesangial cells. ठीक है. आज ये लेक्चर में हम mesangial cells के बारे में देखेंगे. तो remember this diagram. Mesangial cells are of two types, extraglomerular and intraglomerular. चलो अब आते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी से. इसमें जो ये सेल्स आप देख रहे हो दीज ऑल आर पोडोसाइट्स एंड ये जो प्रोजेक्शन है दीज आर पेडिकल्स. दे फॉर्म द विसरल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. गुड इवनिंग डॉक्टर गोविंद. ठीक है. बात करते हैं हम प्रोटीन हमारा क्यों नहीं फिल्टर होता है. दिस इज आर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ठीक है. And this pink one is glomerular basement membrane and this green one is endothelial layer and this is the fenestration of endothelium. ठीक है. This is our podocyte and this is our foot process of podocytes. ठीक है. डायग्राम क्लियर है. जो प्रोटीन है दैट इज anionic in nature and the glomerular capillary is also lined by a anion that is heparin sulfate. Due to the anionic nature of protein, it is repelled by the anion present in our heparin sulfate. डॉक्टर गोविंद पीपीटी की लिंक अभी मैंने कहीं शेयर नहीं की है, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा. लेक्चर देखिए, उसमें मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए. जब शेयर करूंगी तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी. अभी मैंने कहीं शेयर नहीं किया है.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन इज ऑल्सो नॉट फिल्टर्ड बिकॉज दिस इंडोथीलियल फेनेस्ट्रेशन इज स्मॉल. ये जो फेनेस्ट्रेशन है दिस इज स्मॉल. ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज द स्लिट डायफ्राम. This slit diaphragm, which is formed by foot process of podocyte. This slit diaphragm is also small in size. So proteins are not filtered under the normal conditions. ठीक है, कौन कौन सा reason हो गया? Proteins are anionic in nature and they are repelled by anion present in our glomerular capillary. That anion is heparin sulfate. ठीक है, fenestration, endothelial fenestration are also small and slit diaphragm are also small in size. Yes, Dr. Peter, you can download from the Unacademy app. वहाँ पे जो भी lectures मैंने लिए हैं वहाँ पे आपको PDF डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. चलो, this slit diaphragm is due to the presence of some important proteins such as nephrin, podosin and alpha-actinin. These are the protein which help in maintaining the slit diaphragm integrity. So whenever there is mutation in this diaphragm, what will happen? हमारा protein will filter, ठीक है, and it will lead to the nephrotic syndrome, some type of nephrotic syndrome. Nephrin protein अगर mutate होता है then it cause congenital finish type nephrotic syndrome. Podosin protein if it get mutated it will cause steroid resistant nephrotic syndrome. Alpha actinin if it get mutated तो हमारा जो disease होती है that is focal segmental glomerular sclerosis. Clear? Slit diaphragm integrity is maintained by nephrin, podosin and alpha actinin. Nephrin mutation होगा it will lead to congenital finish type nephrotic syndrome. If podosin have mutation it will lead to steroid resistant nephrotic syndrome. If there is mutation in alpha actinin there will be focal segmental glomerular sclerosis. ठीक है, अब आते हैं next topic that is filtration force and styling force. There are basically two types of force out here. You have to understand. First is hydrostatic pressure. Next is our opposing pressure that is oncotic pressure. ठीक है, let me draw a diagram for all of you. This is our glomerular capillaries. और glomerular capillary से filtrate होके substance कहाँ पहुँचता है? हमारा Bowman's capsule में. So this is Bowman's capsule. First is hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure is the pressure exerted by the fluid component present in any compartment. So this is capillary. ठीक है, hydrostatic pressure of capillary is the pressure exerted by the fluid component present in our capillary and it has tendency to move into its neighboring compartment. ठीक है, this capillary also consists of some protein molecule and this protein molecule exert the oncotic pressure. This is oncotic pressure of capillary. ठीक है, and due to which it has tendency to move the water molecule inside it via the osmosis. ठीक है, डायरेक्शन समझ में आया? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का टू द नेबरिंग कंपार्टमेंट, ऑनकोटिक प्रेशर का टूवर्ड्स द कंपार्टमेंट. ठीक है, अब नेक्स्ट है बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल में भी कुछ फ्लूइड कंपोनेंट होगा एंड दैट फ्लूइड कंपोनेंट विल आल्सो एक्सर्ट प्रेशर. लेट्स सी PI दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स द नेबरिंग कंपार्टमेंट. ठीक है, नॉर्मली हमारा प्रोटीन क्या है? फिल्टर नहीं होता, सो देयर विल बी नो प्रोटीन आउट हियर. So there will be
no oncotic pressure exerted in the interstitium. So net filtration क्या हो जाएगा? What is net filtration? Force. इसमें हो जाएगा filtration force minus resorptive force. So filtration force कौन सा है? Our filtration force is hydrostatic pressure of capillary and resorptive force is hydrostatic pressure of Bowman's capsule or interstitium. ठीक है? And oncotic pressure of capillary. Clear है? This net filtration pressure कैसे निकालेंगे? कौन कौन से कंपोनेंट होंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का? क्लियर एवरीबडी? यहां तक क्लियर है? चलो, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज 60 mm of Hg and hydrostatic pressure of Bowman's capsule is 18 mm of Hg. Oncotic pressure of capillary कितनी होती है? Oncotic pressure of capillary is 32 mm of Hg. क्लियर? अब नेट फिल्ट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, फेवरिंग फोर्सेस माइनस अपोजिंग फोर्सेस. दैट इज हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी माइनस oncotic pressure of capillary plus hydrostatic pressure of Bowman's capsule. So it will come around 10 mm of Hg. So this is the net filtration pressure. ठीक है? क्लियर? हमारा oncotic pressure of Bowman's capsule is 0 because normally there is no protein filtration. Clear everybody? चलो, अब आते हैं what is the effect of afferent and efferent arteriole constriction on GFR and our renal blood flow. ठीक है? बहुत ध्यान से सभी लोग देखिएगा. First is our afferent arteriole constriction. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. Afferent arteriole constriction. So say this is our glomerular capillary. This is our afferent arteriole. This is our efferent arteriole. So first situation we are seeing that afferent arteriole undergo constriction. So what will happen? The blood flowing to the glomerular capillary will decrease. ठीक है? So blood flow will decrease. And due to decrease in blood flow, pressure out here, that is hydrostatic pressure of capillary, also decreases. ठीक है? Hydrostatic pressure decreases, so the net filtration pressure will decrease because it is the favoring force. ठीक है? Net filtration pressure decrease हो रहा है, that's why GFR also decreases. ठीक है? Clear? So whenever there is afferent arteriole constriction, there is decrease in GFR, there is decrease in renal blood flow. ठीक है? Do remember this point everybody. और ये afferent arteriole constriction कब कब होता है? In cases of norepinephrine release and in cases of shock. ठीक है? Clear everybody? First situation clear है? चलो, now coming to the next situation, that is afferent arteriole undergo relaxation. So there is relaxation in this afferent arteriole. ठीक है? So what will happen? Blood flow to the glomerulus will increase. So the hydrostatic pressure of glomerular capillary will increase. And due to that, net filtration pressure क्या होगा? Increase होगा. ठीक है डॉक्टर? साइकेट्रिक हम फिर से क्लियर कर लेंगे. फिलहाल ये देख लो एक बार. ग्लोमेरुलर यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल रिलैक्स कर रहा है, सो ब्लड फ्लो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स वाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ आवर ग्लोमेरुलर कैपिलरी विल इंक्रीज. सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, नेट फिल्टरेशन प्रेशर क्या होगा? दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है? नेट फिल्टरेशन इंक्रीज होगा यानी हमारा GFR विल इंक्रीज. ठीक है?
So whenever there is afferent arteriole relaxation, there is increase in GFR, increase in renal blood flow. ठीक है? And it occurs during the release of prostaglandins. So do remember this point. They are very important. Afferent arteriole constriction occurs in the presence of adrenaline and in the cases of shock. Afferent arteriole relaxation occurs in the presence of prostaglandins. Clear everybody? चलो देखो, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फिर से समझा रहे, फिर से देख लो एक बार सभी लोग. दिस इज आर ग्लोमेरुलर कैपिलरी. So this glomerular capillary will be having renal blood flow or renal plasma flow. So this renal plasma flow. So this plasma will be containing some fluid component and there will be protein in this. This fluid component will exert the hydrostatic pressure of capillary. Hydrostatic pressure is the pressure exerted by the fluid component and it has tendency to move to the neighboring compartment. ठीक है? And this protein component will exert our oncotic pressure of capillary. ठीक है? And it has tendency to move the water molecule towards it via osmosis. ठीक है? Neighboring compartment में यानी जो हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्ट्रेट हो गया है, that reaches into everybody, that reaches into our Bowman's capsule. So this is Bowman's capsule. So this Bowman's capsule में filtrate जो आएगा, that will contain some fluid, some anions and many more things, but they will not contain protein out here. ठीक है? तो fluid component will exert hydrostatic pressure of Bowman's capsule and it has tendency to move into neighboring compartment. ठीक है? So direction क्या हो गया? हमारा filtration force कौन सा हो गया? Our filtration force is hydrostatic pressure of our glomerular capillary. ठीक है? Resorptive force कौन सा हो गया? Resorptive force is our oncotic pressure of glomerular capillary and हमारा hydrostatic pressure of Bowman's capsule. So हमारा net filtration force क्या हो जाएगा? Our net filtration force is equal to filtration force minus resorptive force. Filtration force क्या है? Hydrostatic pressure of capillary, glomerular capillary minus resorptive force. Resorptive force कौन कौन सा है? Oncotic pressure of Bowman's capsule, sorry, glomerular capillary plus hydrostatic pressure of Bowman's capsule. So this will give us the net filtration pressure. Clear doctor? Clear है ये? चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज efferent arteriole undergo constriction. ठीक है? And this occurs in the presence of angiotensin 2. ठीक है? So this afferent arteriole undergo constriction. ठीक है? तो whenever there is constriction in afferent arteriole, the blood going to the afferent arteriole will decrease and due to which what will happen, hydrostatic pressure of capillary increases. Hydrostatic pressure of capillary increase होगा, हमारा filtration force will increase. ठीक है? And when filtration force increase होगा, there will be increase in GFR. ठीक है? हमारा GFR increase होगा and due to increase in GFR क्या होगा, हमारा normally protein filtered नहीं होता है, so that protein will start accumulating inside the glomerular capillaries. ठीक है? This is the protein molecule that starts accumulating inside the glomerular capillaries and due to which what happened, the oncotic pressure exerted by this capillary proteins will increase. ठीक है?
हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, filtration increase होगा. That's why what happened later on, protein start accumulating, and due to the accumulation of protein हमारा oncotic pressure increase होता है. ठीक है, oncotic pressure क्या है? Resorptive force. It is the resorptive force. ठीक है, resorptive force increase होगा, so GFR decreases. So in cases of efferent arterial constriction, we will get the biphasic response. Clear everybody? So do remember this one. This is very much important. काफी बार question repeat हुए. Efferent arterial constriction. It is due to the angiotensin 2. And what happened? Initially जो constriction है उसकी वजह से hydrostatic pressure of capillary increases. So net filtration pressure will increase. So GFR will increase. Later on what will happen? Due to protein as not filtered, so protein start accumulation inside the glomerulus. That will cause increase in oncotic pressure of this glomerular capillaries. ठीक है, oncotic pressure increase होगा, resorptive force will increase, so GFR क्या होगा? Decrease होगा. ठीक है, renal blood flow constriction है, renal blood flow क्या होगा? Decrease होगा. Clear? Situation clear है? Efferent arterial constriction में हमें biphasic response मिलता है. Do remember this point everybody. Proceed करें. चलो, next situation, that is efferent arterial relaxation. Efferent arterial relaxation है, so hydrostatic pressure of capillary क्या होगा? Decrease होगा. Hydrostatic pressure of capillary decrease होगा, GFR will decrease. Clear? Renal blood flow increase होगा. So क्या क्या देखा हमने? During relaxation, either there is a relaxation in afferent arteriole or efferent arteriole, there will be increase in GFR. And whenever there is constriction, either in afferent or efferent arteriole, there will be increase renal blood flow. Relaxation होगा, increase renal blood flow. Constriction होगा, decrease renal blood flow. ठीक है, so this is the summary. Remember this point. Clear everybody? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ GFR. To measure the GFR, the gold standard substance is our inulin. What is the criteria to select the substance to measure the GFR? The criteria are the substance should be freely filtered. There should be no resorption of substance. There should be no secretion of substance, and the substance should be non-toxic. ठीक है, these are the criteria to select a substance to measure the GFR, and these all features are seen in the inulin. So this inulin is the gold standard substance to measure the GFR. Freely filtered, no resorption, no secretion, and it should be non-toxic. Clear everybody? But the most commonly used substance is our creatinine. Why it is creatinine? Because it is the endogenous product that is formed in our body only. ठीक है, so that's why it is the most commonly used substance to measure the GFR. The gold standard substance is inulin, but the most commonly used substance is our endogenous product in our body, that is creatinine. Clear? चलो, अब आते हैं new marker for the estimation of GFR. The newly used marker is cystatin C. Gold standard is inulin. Most commonly used is creatinine, and the new marker is cystatin C.
ठीक है, GFR इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं. GFR इज इक्वल टू यूरिन इन्यूलिन कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ यूरिन अपॉन प्लाज्मा इन्यूलिन कंसंट्रेशन. ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल इन्यूलिन क्लियरेंस कितना आता है 125 ml पर मिनट, एंड हमारा जो नॉर्मल GFR है दैट इज ऑल्सो 125 ml per minute. So it is the gold standard substance to measure the inulin. Sorry, it is the gold standard substance to measure the GFR. Clear everybody? यहाँ तक क्लियर है? चल, अब आते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू मेजर दिस GFR. ठीक है, फर्स्ट हम रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है. रीनल ब्लड फ्लो इज 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट. हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना है 5 लीटर. सो इट विल कम अराउंड 1250 ml per minute. दिस इज द नॉर्मल रीनल ब्लड फ्लो. ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है. हमारा ब्लड में 55% इज प्लाज्मा. सो रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या हो जाएगा 55% ऑफ रीनल ब्लड. ठीक है, सो दिस विल कम अराउंड 625 ml पर मिनट. ठीक है, और इसको मेजर किससे करते हैं. हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए वी यूज द सब्सटेंस दैट इज पैरा अमीनो हिपैरिक एसिड. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट. GFR के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज इन्यूलिन, and for renal plasma flow we have para aminohipparic acid. ठीक है, and this para aminohipparic acid is only 90% excreted by kidney. ठीक है, that's why the GFR when we are measuring with the para aminohipparic acid that will be underestimated. ठीक है, 90% हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है. सो इसका एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 0.9. अब बात करते हैं दिस इज अंडरएस्टिमेटेड, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बाय दिस फॉर्मूला. द एक्चुअल रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू एस्टिमेटेड रीनल प्लाज्मा फ्लो अपॉन एक्सट्रैक्शन रेशियो. ओनली 90% इज एक्सट्रैक्टेड बाय किडनी. सो इट्स एक्सट्रैक्शन रेशियो कितना हो जाएगा extracted by kidney. So its extraction ratio is 0.9 and estimated renal plasma कितना flow होता है 625. तो actual renal plasma flow कितना आ जाएगा 700 ml per minute. So this is our actual renal plasma flow. Next is filtration fraction. What is filtration fraction? Filtration fraction is equal to GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो. रीनल प्लाज्मा फ्लो का कितना पार्ट हमारा फिल्टर्ड हो रहा है दैट इज फिल्टरेशन फ्रैक्शन. ठीक है, GFR कितना होता है 125 ml एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो हमारा जो एस्टिमेटेड है दैट इज 625. सो द फिल्टरेशन फ्रैक्शन इन नॉर्मल कंडीशन इज 20%. क्लियर? Do remember this formula. Filtration fraction is GFR upon renal plasma flow. ठीक है, इन नॉर्मल सिचुएशन इट इज 20%. क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है? चल, अब आते हैं हमारा रेगुलेशन ऑफ GFR. हमारी बॉडी में दिस GFR इज अंडर रेगुलेशन. कैसे रेगुलेट होता है? बाय द टू मैकेनिज्म. फर्स्ट इज ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR, सेकेंड इज वाया द मेसेंजियल सेल. ठीक है, ऑटो रेगुलेशन में क्या होता है whenever there is change in BP the GFR remain constant. This is via auto regulation of GFR. ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं इसमें क्या होता है. फर्स्ट इज this afferent arteriole undergo vasoconstriction. Whenever there is increase in blood pressure, this afferent arteriole undergo vasoconstriction. See this vasoconstriction, and due to vasoconstriction क्या होगा हमारा GFR decrease हो जाएगा. But this occurs under certain range, and this occurs at the range between 80 to 180 mm of Hg.
इस प्रेशर रेंज में हमारा GFR ऑटो रेगुलेट होता है. इससे बियॉन्ड अगर ब्लड प्रेशर जाएगा तो हमारा ऑटो रेगुलेशन डजंट वर्क. क्लियर एवरीबडी? चलो कैसे रेगुलेट होता है. फर्स्ट इज मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन, जो भी हमने पढ़ा. हमारा एफरेंट आर्टेरियल अंडरगो वेजो कंस्ट्रिक्शन. ये कैसे होता है? व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, हमारा एफरेंट आर्टेरियल अंडरगो स्ट्रेचिंग, एंड ड्यू टू द स्ट्रेचिंग कैल्शियम चैनल्स इन दैट वेसल्स in that arterioles get open. ठीक है, कैल्शियम चैनल ओपन होगा, हमारा स्मूथ मसल लाइनिंग विल अंडरगो कंस्ट्रिक्शन एंड इट विल कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, एंड फाइनली हमारा GFR विल ऑल्सो डिक्रीज. क्लियर एवरीबडी? मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन क्या हो रहा है? whenever there is increase in blood flow, there will be stretching in the arterioles. So due to that stretching, calcium channel get open, and due to the calcium channel opening, there will be vasoconstriction, and vasoconstriction की वजह से there will be decreased blood flow, there will be decreased GFR. Clear? Next mechanism is tubuloglomerular feedback. What happen? Whenever there is increase in GFR increase होगा, filtrate क्या होगा? Increase होगा. Filtrate will consist of sodium chloride also. So the sodium chloride concentration in the filtrate will increase, and this increased sodium chloride will activate macula densa. Macula densa आगे हम पढ़ेंगे. Remember this point. Macula densa activate हो जाएगा, and that will be releasing the adenosine. ठीक है, and that adenosine cause the vasoconstriction of afferent arteriole. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. एंड ड्यू टू वेजोकंस्ट्रिक्शन हमारा क्या होगा? ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, GFR डिक्रीजेस. फर्स्ट इज मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन, सेकेंड इज ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक. मायोजेनिक में क्या हो रहा था? स्ट्रेचिंग की वजह से कैल्शियम वॉज मूविंग इनसाइड एंड इट वॉज कॉजिंग वेजोकंस्ट्रिक्शन. ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक में क्या हो रहा है? व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन GFR, सोडियम क्लोराइड जो कि फिल्टर्ड होगा, दैट विल बी मूव, and that will activate macula densa, and that macula densa will release adenosine. ठीक है, and this adenosine cause the constriction of afferent arteriole, and हमारा GFR decrease हो जाएगा. Clear everybody? Auto regulation clear है? चलो अब आते हैं mesangial cell also help in regulation of GFR. How does it do? Our normal glomerular capillary is enclosed by mesangial cell. Suppose this is a glomerular capillary and this is our mesangial cell. ठीक है, normally क्या होता है? This glomerular capillary is enclosed. Yes, Dr. Shakir, adenosine हमारा vasoconstrictor है. ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी इंक्लोज करता है, इज इनक्लोज बाय मेसेंजियल सेल. ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज मेसेंजियल सेल कॉन्ट्रैक्शन, इट विल इनक्लोज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी. ठीक है, दैट विल कॉज द वेजो कंस्ट्रिक्शन, एंड ड्यू टू दैट हमारा GFR डिक्रीजेस. क्लियर? एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉजेज मेसेंजियल सेल कॉन्ट्रैक्शन? आवर एंडोथेलिन, आवर angiotensin 2, and our norepinephrine. These all three, endothelin, angiotensin 2 and norepinephrine, these all causes contraction in mesangial cell, and due to the mesangial cell contraction there will be decrease in GFR. ठीक है, clear everybody? Remember this point, mesangial cell contraction is caused by endothelin, angiotensin 2 and norepinephrine. Clear everybody? चलो next situation है, that is mesangial cell relaxation. ठीक है, mesangial cell relax करेगा, हमारा afferent arteriole dilate होगा, that will cause vasodilation, and due to vasodilation GFR will increase. ठीक है, yes Dr. Shakir, mesangial cell is also known as Lasix cell. Very good. Mesangial cell relaxation,
वेजोडाइलेशन होगा, GFR इंक्रीज होगा. And the substance which causes mesangial cell relaxation are nitric oxide, natriuretic peptide and cyclic AMP. ठीक है, nitric oxide, always I tell, it is a universal relaxant. ठीक है, in blood it also cause vasodilation. Out here it is also cause vasodilation. It is a universal relaxant. ठीक है, so mesangial cell relaxation is via nitric oxide, atrial natriuretic peptide and cyclic AMP. ठीक है, remember this point, mesangial cell contraction is mediated by, mesangial cell relaxation is mediated by. Clear everybody? किसी को अभी तक कोई डाउट? आज के सेशन में किसी को अभी तक कोई डाउट है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. चलो प्रोसीड करें. नाउ दिस इज द डायग्राम. दिस इज आर glomerular cell, this is our podocyte, this is food process of podocyte, and this is our mesangial cell. This mesangial cell is enclosing our glomerular capillary. डॉक्टर शाकिर अभी जस्ट हम फिर वही डिस्कस करेंगे, देखते जाइए. मेसेंजियल सेल क्या करता है, हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी को इनक्लोज करता है. ठीक है, अब देखो कैसे कैसे वर्क करेगा. जब भी मेसेंजियल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी क्या होगी, क्लोज होगी. ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है. सो फिल्टरेशन कोफिशिएंट हमारा जो GFR होता है दैट इज इक्वल्स टू फिल्टरेशन कोफिशिएंट इनटू नेट फिल्टरेशन प्रेशर. हमारा नेट फिल्टरेशन प्रेशर कितना होता है, 10 mm of Hg, एंड सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, फिल्टरेशन कोफिशिएंट ऑफ द कैपिलरी डिक्रीजेस. ठीक है, फिल्टरेशन कोफिशिएंट डिक्रीज होगा, GFR विल आल्सो डिक्रीज. ठीक है, एंड इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2, एंटीडायूरेटिक हार्मोन, एडेनोसिन, एंडोथिलिन, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है, क्लियर हुआ. मेसेंजियल सेल जब रिलैक्स करेगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी ओपन अप होगी, एंड ड्यू टू द ओपनिंग सरफेस एरिया विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया आवर फिल्टरेशन कोफिशिएंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. फिल्टरेशन कोफिशिएंट इंक्रीज होगा, GFR विल आल्सो इंक्रीज. सो मेसेंजियल सेल रिलैक्सेशन कॉज इंक्रीज इन GFR. ठीक है, एंड ये कब कब होता है, ड्यूरिंग atrial natriuretic peptide, nitric oxide and cyclic AMP. Clear Dr. Shakir? Clear हुआ? प्रोसीड करें. जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, फर्दर प्रोसीड करें. चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन पार्ट. जो भी आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन हैं वो अब करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following glycoprotein is found in glomerular basement membrane? First is chondroitin sulfate, option B keratin sulfate 1, option C heparin sulfate, option D keratin sulfate 2. Everybody answer this question.
Which of the following glycoprotein is present in our glomerular capillary basement membrane? Very good everyone. Answer is C. Very good everyone. I guess clear है. Next question करें. Now coming to the next question. Tubular-glomerular feedback is for option A, controlling blood sodium level, option B, controlling plasma volume, option C, controlling GFR, option D, maintenance of systemic blood pressure. ठीक है. Tubular-glomerular feedback is for. Everybody answer this question. Very good everyone. Answer is C. Controlling GFR. हमारा जो GFR है that is auto regulated via tubular-glomerular feedback. Very good everyone. Next question. Which of the following statement are true or false? ठीक है. Option A, mesangial cell contraction increases GFR. Option B, efferent arteriole constriction decreases renal blood flow. Option D, C, mild constriction of efferent artery decreases GFR. Option D, mesangial cell contraction increases glomerular hydrostatic pressure. ठीक है. क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया. डॉक्टर सैयद, आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा. सब कुछ हम सर्च करके नहीं दे सकते आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा पीएचडी एग्जाम के सिलेबस. ठीक है. क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ऑप्शन सी, माइल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ efferent artery decreases GFR. ऑप्शन डी, mesangial cell contraction increases glomerular hydrostatic pressure. ठीक है. सभी ऑप्शन पढ़ लिया. नाउ एवरीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन. डॉक्टर शाकेत, गैनन गाइटन दोनों ही अच्छे बुक्स हैं. किसी को भी आप फॉलो कीजिए. एक स्टैंडर्ड बुक चूज कीजिए अपने लिए, गैनन या गाइटन, उसे फॉलो कीजिए. उससे बेस्ट बुक कुछ भी नहीं होगा. सारे क्वेश्चंस वहीं से होते हैं. ठीक है. Which of the following statement are true or false? Everybody answer this question. ऑप्शन बी क्या है? ट्रू है, फॉल्स है? देखो, option A, mesangial cell contraction increase GFR, it decreases the GFR, so this statement is false. Option B, efferent arteriole constriction decreases renal blood flow, this is true. efferent arteriole constriction हो या afferent arteriole constriction हो, हमारा नो डॉक्टर रेहान, आंसर बी इज ट्रू. आज ही हमने पढ़ा, एफरेंट आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन हो या efferent आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन हो, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा. ए फॉल्स है, बी ट्रू है. सी, माइल्ड कंस्ट्रिक्शन ऑफ efferent आर्टरी डिक्रीजेस जीएफआर. जब भी माइल्ड कंस्ट्रिक्शन ऑफ efferent आर्टरी होगा, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी इंक्रीज होता है एंड इनिशियली हमारा जीएफआर इंक्रीज होता है. रिमेंबर, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. Option B, mesangial cell contraction increases the glomerular hydrostatic pressure. Mesangial cell contraction की वजह से क्या होता है? हमारा surface area decrease होता है, filtration coefficient decrease होता है, hydrostatic pressure नहीं increase होता है. हमारा जब भी mesangial cell contract करता है, GFR decrease होती है. So this is also false. Only statement B is true. Clear everybody?
Yes, Dr. Megha, C is false. Chalo, next question. Calculate the net filtration pressure with the following data. Hydrostatic pressure of glomerular capillary is 42 mm of Hg. Oncotic pressure of glomerular capillary is 12 mm of Hg. Hydrostatic pressure of Bowman's capsule is 16 mm of Hg. ठीक है, data is given है and assume that no protein were filtered. So we have to calculate the net filtration pressure. कर लोगे सभी? Now everybody answer this question. Very good everyone. Answer is C. Clear everybody? Chalo, next question. GFR is increased in all the cases except option A, renal blood flow increase. Option B, efferent arteriole constriction. Option C, renal stone in ureter. Option D, increase oncotic pressure. Chalo, everybody answer this question. Very good, Dr. Noor. Everybody answer this question. Very good, Dr. Rehan. हमारा renal blood flow increase होगा, hydrostatic pressure of capillary increases, so GFR increases. Afferent arteriole constrict होता है, हमारा hydrostatic pressure of capillary increase होता है initially and initially हमारा GFR increases. Dr. Ajit Maurya, B ऑप्शन क्या है? efferent arteriole constriction है, तो हमारा efferent arteriole से blood जो glomerular capillary से बाहर जा रहा है that will be less, so hydrostatic pressure capillary की क्या होगी? increase होगी and initially GFR increase होता है. ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था. efferent arteriole constriction में biphasic response होता है. initially हमारा GFR increase होता है, finally GFR decrease होता है. remember? तो GFR इस केस में इंक्रीज होगा, रीनल स्टोन होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, दैट विल कॉज हमारा डिक्रीज GFR. सो आंसर इज सी. क्लियर एवरीबॉडी? डॉक्टर सुधाकर, ऑनकोटिक प्रेशर किसकी? कैपिलरी की होती है, ठीक है, और दैट इज अपोजिंग फोर्स. अगर अपोजिंग फोर्स इंक्रीज होगा तो हमारा ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी हमारा फिल्टरेशन डिक्रीज होगा, सो GFR विल डिक्रीज. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर था ये क्वेश्चन सभी के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. GFR will be increased if option A, increase in hydrostatic pressure in Bowman's capsule. Option B, decrease in oncotic pressure of glomerular capillary. Option C, increase in oncotic pressure in glomerular capillaries. Option D, decrease hydrostatic pressure in glomerular capillaries. चलो everybody answer this question. GFR is increased in which case? Very good everyone. Oncotic pressure of glomerular capillary is opposing force, so opposing force decrease होगा, GFR will be increased. Very good everyone. चलो next question.
Efferent arterial constriction causes all except. Option A, decrease in GFR. Option B, decrease renal blood flow. Option C, decrease oncotic pressure in pretubular capillaries. Option D, increase hydrostatic pressure in glomerular capillaries. Chalo, everybody answer this question. बिल्कुल ध्यान से आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का. Very good, Dr. Megha. Answer is C. Remember, efferent arterial constriction है. Efferent arterial constriction है तो क्या होगा? Efferent arteriole से जो blood outflow होगा, that will be less. So capillary में जो fluid होगी, that starts accumulating. So the hydrostatic pressure of capillary increases. So initially GFR क्या होगा हमारा? GFR increase होता है, and due to increase in GFR हमारा protein starts accumulating inside the capillary. Remember? And due to this increase in protein, there is increase in oncotic pressure of capillary. And that's why again GFR decreases. So, renal blood flow क्या होगा? Decrease होता है. GFR decrease भी होता है. Hydrostatic pressure of capillary is also increasing. Oncotic pressure of capillary is increasing. So answer is C. Clear everybody? Dr. Psychiatric Department, Dr. Shashank, Dr. Sudhakar, सभी को clear है? Proceed करें. चलो, coming to the next question. In comparison to cortical nephron, juxtamedullary nephron has. चलो ये लास्ट में डिस्कस करेंगे. अभी हमने nephrons के टाइप्स नहीं पढ़े. Skip करते हैं. Next question. Renal blood flow is 1 to 1.5 liter per minute. Option B 1.5 to 2 liter per minute. Option C 2 to 2.5 liter per minute. Option D 2.5 से 3 liter per minute. ठीक है? Question सभी ने पढ़ लिया ना? Everybody answer this question. Very good, Dr. Shashank. Very good, Dr. Peter. Answer is A. हमारा जो renal blood flow है, that is 1 to 1.5 liter per minute. Very good, everyone. Answer is A. Next question. Two substances that can be probably used to determine filtration fraction are. Option A, insulin and mannitol. Option B, urea and rest. Option C, para-aminohippuric acid and phenol breath. Option D, inulin and para-aminohippuric acid. Option E, impermeable in loop of Henle. So everybody answer this question also. The two substances that can be probably used to determine filtration fraction. Very good, everyone. Filtration fraction क्या होता है? Anybody? Filtration fraction? Filtration fraction is the GFR upon renal plasma flow. And this GFR के लिए we use the gold standard substance inulin, and for renal plasma flow we use the para-aminohippuric acid. So answer is D. Clear, everybody? Now coming to the next question. The filtration barrier has a pore of which size? 1 to 2 nanometer, 4 to 6 nanometer,
Option C 8 to 10 nanometer. Option D 10 to 12 nanometer. Chalo, everybody answer this question. Yes, Dr. Ajit Maurya. Renal filtration fraction is हमारा filtration fraction जो होता है that is equals to GFR upon renal plasma flow. ठीक है, and renal plasma flow के लिए we are using para aminohepatic acid. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन का आंसर करो सभी. Everybody answer this question. चलो इसका आंसर है 8 to 10 नैनोमीटर. फिल्ट्रेशन पोर्स कितने साइज के होते हैं? 8 to 10 नैनोमीटर्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिल्ट्रेशन प्रेशर एंड ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी इज 10 mm of Hg, 6 mm of Hg, 15 mm of Hg और 2 mm of Hg. The net filtration pressure in the glomeruli is, I guess ये तो easy है. Everybody answer this question. Very good everyone. Answer is A. हमारा net filtration pressure कितना होता है? 10 mm of Hg. Very good everyone. चलो next question. In normal person at resting condition GFR is, I guess ये भी easy है सभी के लिए. In normal resting person, the GFR is, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हमारा GFR 125 ml per minute. वेरी गुड एवरीवन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यूरिन फ्लो रेट इज गिवन, इट इज 10 ml per minute. Plasma inulin is given and urine inulin is given. Which of the following statement is true? Option A, inulin clearance is equal to GFR. Option B, inulin clearance is greater than GFR. Option C, inulin clearance is greater than GFR. Make it less than GFR. ठीक है. Option D, GFR cannot be calculated by above data. चलो ये क्वेश्चन का आंसर करो. For the given data, which statement is true? Yes, Dr. Psychiatric Department, हमारा जो filtration fraction होता है वो GFR upon renal plasma flow. So, inulin and para-aminohepatic acid. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया सभी ने? Anyone? रेहान, डॉक्टर शशांक, कोई बता रहा है कैसे सॉल्व किया? देखो, यस वेरी ट्रू डॉक्टर शशांक. हमारा जो इन्यूलिन क्लियरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आवर इन्यूलिन क्लियरेंस इज इक्वल टू यूरिन इन्यूलिन into urine flow rate upon हमारा plasma inulin. Remember this formula? So इससे हम inulin clearance निकालेंगे and that will come 125 ml per minute. So it is equals to GFR. हमारा normal GFR कितना होता है? 125 ml per minute. So this statement is true. Inulin clearance is equal to GFR. Clear everybody?
चलो, next question. The two particles have the same diameter. Which one will pass easily through the glomerular capillaries? Option A, positive charge. Option B, negative charge. Option C, any of the above. Option D, charge has no relation. Everybody answer this question. I guess ये तो easy है. हमारा जो glomerular capillary है, that is lined by an ion, that is heparin sulfate. So positively charged particle will move easily. Very good, everyone. चलो, next question. A negatively charged molecule is filtered with more difficulty compared to the positive one because. I guess ये भी easy है फिर तो. चलो, सभी आंसर करेंगे. A negatively charged molecule is filtered with more difficulty as compared to positive one. Why? Due to the presence of heparin sulfate, which is negatively charged. So, negatively charged molecule is filtered with more difficulty. Very good, everyone. Chalo, next question. The correct formula for GFR is. Very good, everyone. GFR is equals to filtration coefficient into 10. That is net filtration pressure. Chalo, next question. The glomerular filtration rate is increased when? Option A, plasma oncotic pressure is increased. Option B, glomerular hydrostatic pressure is decreased. Option C, tubular hydrostatic pressure is decreased. Option D, increased renal blood flow. ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ा. Now everybody answer this question. GFR is increased when? Everybody answer this question. देखो, oncotic pressure increase होगा, हमारा GFR will decrease. Glomerular hydrostatic pressure decrease होगा, filtration will decrease. Tubular hydrostatic pressure, that is hydrostatic pressure of our glomerular capillaries, that will decrease. So glomerular Bowman's capsule की जब hydrostatic pressure decrease होगी, our GFR will increase. So answer is C. ठीक है. Renal blood flow भी जब increase होगा, so whenever there is increase in renal blood flow, हमारा hydrostatic pressure capillary की क्या होगी, that will increase. So GFR will increase in this case also. So answer is both C and D. Clear, everybody? Yes, Dr. Psychiatric department, आप बहुत डिले चल रहे हो. ये क्वेश्चन समझ में आया डॉक्टर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now coming to the next question. Effect of sympathetic stimulation on GFR. Option A, increased GFR with afferent arterial dilation. Option B, increased GFR with afferent arteriolar dilation. Option C, decreased GFR with afferent arterial constriction. Option D, decreased GFR with efferent arterial constriction. Chalo, everybody answer this question.
Everybody answer this question. Sympathetic stimulation होगा, what will be the GFR? Very good, Dr. Shashank. Answer is C. Afferent arteriole sympathetic जब भी stimulation होगा, that will release adrenaline, and that adrenaline will cause afferent arteriole constriction. Remember? And due to afferent arterial constriction, blood flow decreases, so hydrostatic pressure of capillary decreases, so GFR will be decreased. Clear, everybody? Now coming to the next question. All of the following all should be feature of a substance to measure GFR, except freely reabsorbed, freely filtered, not secreted by kidney. Option D, not none. Chal, answer this question, everybody. Very good, everyone. The substance should be not freely filtered, should not be reabsorbed. So answer is A. Clear, everybody? Chalo. Next question. Best test for GFR is inulin, hippuric acid, creatinine, and para-aminohippuric acid. Everybody answer this question. The best test for GFR is yes, very true. The gold standard substance is our inulin. Okay? Now coming to the next question. The best measure for GFR. The same question with different option. Option A, serum creatinine. Option B, urine output. Option C, BUN. Option D, BAN. Everybody answer this question. Very good, everyone. अगर ऑप्शन में हमारा इन्यूलिन नहीं है तो वी विल गो फॉर द सेरम क्रेटिनिन. ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस टू मेजर द GFR. ठीक है, क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट क्वेश्चन. Relaxation of mesangial cell of kidney is brought by option A, cyclic AMP, option B, endothelin, option C, platelet growth factor 2, option D, vasopressin. Chalo, everybody answer this question. Relaxation of mesangial cell of kidney is brought by mesangial cell relaxation is brought by. Everybody remember, mesangial cell relaxation is brought by nitric oxide, atrial natriuretic peptides, and cyclic AMP. So answer is E. Clear, everybody? Very good. Next question. GFR is increased by option A, atrial natriuretic peptide, option B, vasopressin, option C, histamine, option D, endothelin. I guess ये clear होगा. चलो, everybody answer this question.
Very good, Dr. Megha. Very good, Dr. Shashank. Atrial natriuretic peptide, it will cause mesangial cell relaxation. And due to the relaxation of mesangial cell, हमारा surface area increase होगा, filtration coefficient increases, so GFR increases. Clear everybody? Chalo. Next question. The glomerular filtrate contain all except option A bicarbonate, option B albumin, option C glucose, option D sodium. Everybody answer this question. Very good, everyone. Hamara protein is normally not filtered from the glomerulus. Answer is B. Next question. Minimum filtration through glomerulus is glucose, inulin, creatinine, myoglobulin. Everybody answer this question. The minimum filtration through glomerulus is for very good, Dr. Rehan. Answer is D, myoglobin. हमारा myoglobin filtered नहीं होगा. Inulin freely filtered होता है. Creatinine freely filtered होता है. That's why they are used for measuring the GFR. It should be freely filtered. There should be no resorption. That should be non-toxic in nature. Clear? Next question. With increase in flow to the loop of Henle, decrease in GFR is by option A counter current exchanger, option B glomerulotubular balance, option C tubuloglomerular feedback, option D counter current multiplier. With increase in blood flow to the loop of Henle, there will be decrease in GFR. This is via everybody answer this question. Very good, Dr. Shashank. Tubuloglomerular feedback. Whenever there is increase in blood flow, initially क्या होगा? GFR increase होगा, and due to increase in GFR, what will happen? हमारा जो sodium chloride है, that will be more filtered, and that will activate the macula densa, and that macula densa will release adenosine, and हमारा GFR decrease हो जाता है. This is tubuloglomerular feedback. Very good, everyone. Answer is C. Chalo. Next question. According to myogenic hypothesis of renal autoregulation, the afferent arteriole contract in the response to stretch induced by option A noradrenal nitric oxide release, option B noradrenaline release, option C opening of calcium channel, option D adenosine release. Everybody answer this question. According to myogenic hypothesis of renal autoregulation, the afferent arteriole contract in response to a stretch induced by very good, Dr. Shashank. Very good, Ajit Maurya. Answer is C. Dr. Megha and Dr. Rehan, noradrenaline is released in tubuloglomerular feedback. Here we are asking about myogenic hypothesis.
In myogenic hypothesis, what it states that whenever there is increase in GFR, there will be increase in stretching, and due to this stretching, there will be opening of calcium channel. ठीक है, and that calcium will cause vasoconstriction and हमारा GFR decrease हो जाता है. This is myogenic hypothesis. Clear, Dr. Megha and Dr. Rehan? चलो, next question. I guess this was last question. This was last question. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, आई होप यू लाइक द सेशन. If you like the session, do like and share with your friends so that many more can join. इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए. Like and share the video with your friends so that many more can join. And subscribe our channel, that is Let's Crack NEET PG, and press the bell icon so that you will get notification of every class and you won't miss a single class. NEET Physiology मेरा पेज है टेलीग्राम पे, इसे फॉलो कर लीजिए. डॉक्टर रेहान क्लिनिकल एस्पेक्ट हम लास्ट में कवर कर लेंगे. दिस टाइम फॉर श्योर हम रेहान क्लिनिकल एस्पेक्ट कवर कर लेंगे. चलो, नीट फिजियोलॉजी या अनअकैडमी फिजियोलॉजी सर्च कर लीजिए. ठीक है, सो दैट आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रही और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो. ठीक है, इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन, डू यूज माई रेफरल कोड, दैट इज डॉक्टर निधि, to get instant 10% discount in your subscription, and you will be definitely benefited if you take the subscription. Most welcome Dr. Rehan, most welcome Dr. Megha. चलो, आज का सेशन यही होता है. रेगुलर मेहनत करते रहिए. You will definitely achieve your target. You will definitely be in your dream college. There is no shortcut. ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कीजिए ताकि आप अपने theoretical knowledge को अप्लाई करना सीख सको. That is more important for your NEET PG examination. So let's crack it together. Thank you so much everybody for joining. Lastly, मेरा referral code बिल्कुल याद रखिएगा. That is Dr. Nidhi, to get instant 10% discount in your subscription, and your subscription fee will become more economical. Most welcome Dr. Shashank. कल का lecture same 5 PM. Tomorrow we will study about proximal convoluted tubule, and we will next cover the loop of Henle. So we will cover the proximal convoluted tubule and loop of Henle tomorrow. So be there everyone. Thank you so much everyone for joining.